Good afternoon, all of you, and welcome for our session of linear equation with two variables. Today we are going to discuss more on formation of equation in case of word problem. And here the most common question which comes is a taxi question. We call it as a taxi question. Why? Because it deals with a taxi, a very common example of linear equation with two variables. So let's see how it works. A very basic thing, but you have to repeatedly watch what we are writing. Okay, so pay attention and this will help you to frame the question. So before starting the question, to understand the concept, I'll just give you a pattern which you have to observe and generalize it. Could you observe this pattern and generalize something? What would be the next term here? Okay, I hope you're getting it. What is the next term? So you could see after 3, the starting term is 3, and then the next number is return is 7, then 11, then 15, then 19, then 23. So if you have to follow, what would be the next number? Yes, you correctly answer 4 ahead. We have to go 4 move further 4 moves. So 23 and plus 4, it will give you 27. If I ask you the next number here in the same pattern, we'll say 31 and so on. Okay, so are you getting that pattern? It's quite simple to understand. Now I'll put this in a taxi form. Okay, this pattern could be any. If I say 3, 13, then what could be the next number according to this pattern? Yes, after 3, 13 is coming. So what would be the next question in with this method? 3, 13, 23, 33, okay, 43, so on, right? Okay, so let's go with the question. What does it say if you have used the auto rickshaw also? You know that as soon as you sit in the auto, you have some fixed rent to be paid, right? Apne meter dekha, then we turn the meters, so meter is on, and then you sit on the auto. If you travel for first 1 kilometer or 1.5 kilometer, you pay the amount of 18 rupees, right? And after that, every 100 meter, the distance covered, the meter changes into one unit further, right? So with the same, the taxi is also followed, the meter system. So here we deal with such question. Suppose I tell you that for the first 1 kilometer, the amount is taken as suppose 3 rupees. Okay, or maybe I'll make it bigger because of the present situation, nobody will take us in 3 rupees. Okay, so let's make it as I'll take it as 8 rupees. Okay, and then as you move on further for 100 meter, or say for the next kilometer, this is for first kilometer. Okay, if when you travel first 1 kilometer, you will be paid 8 kilometer. Okay, as soon as the second, for the every second kilometer, the next kilometer, you have to pay plus 5. Fine. So first 1 kilometer means whether you go for 1 kilometer or less than 1 kilometer, you have to pay for 8 rupees. For second kilometer, up 1 kilometer goes, and for the second kilometer, you will pay plus 5 to it. Then for third kilometer, one more 5 you will pay. Means along with this again plus 5. The next 4th kilometer, you will pay one more 5 and so on. So could we make some pattern like this? So it means if I'm traveling for 1 kilometer only, I'll just go with the vertical method here, where I'm assuming something. Say for the first 1 kilometer, I'm paying 8 rupees. Fine. Okay, I'll leave some space because we have to form the equation. Okay, for first 1 kilometer, I'm paying rupees 8. Okay, and 10 multiple of 5. You are very correct. Yes. For second kilometer, this 8 rupees I have to pay. So suppose somebody has traveled for 2 kilometers, then this 8 rupees plus this 5 rupees. Now watch it carefully. Look at it how I'm writing. Okay, don't be in hurry to type it here, please. I request you don't. For third kilometer, if I have traveled for 3 kilometers, I'll pay one more 5 rupees. For fourth kilometer, I'll pay 3 more 5s.
So can I say 8 plus 5 times 3? Isn't it? Can I say here is 8 plus 2 times 5? Here 8 plus 1 times 5. Is it clear to you? Yes. So if I make it 5 kilometers, again you will say ma'am 8 plus 5 will be 4 times. Are you getting this pattern, everyone? I just want your answer for yes. So I move on with other concept. Like we continue with the same. So I hope this pattern is clear to you. The way we wrote here, like, 8. Now look at this. 8, then 13. Then what is our next amount? 18. Then what is the next amount? 23. Isn't it? So isn't it the follow same number pattern? Okay. But right now we are not interested in this. Look at this way. Okay. I hope this is clear to everyone. Okay. So I hope this is clear to all. What I said. Now, if I take, let the distance covered, because ultimately you want to write in x and y, right? So we want the variables to be defined. Let the distance covered be x kilometer. जैसे यहाँ तो मैंने बताया 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, राइट? तो सपोज मैंने x किलोमीटर है, मतलब कि थोड़े टाइम में बाद कोई तो किलोमीटर है, तो मैंने x किलोमीटर ट्रैवल किया एंड टोटल फेयर यानी कि अमाउंट आपका जो है टोटल फेयर भी ₹y, ठीक है? जो हमारा टोटल अमाउंट जो हम पे करने वाले हैं उसको हम y कहेंगे और ये हमारा x है यहाँ पे। तो आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पे फर्स्ट x is 1 तो आपका y क्या है 8, when x is 2 तो आपका y क्या हो रहा है 13. Okay, I'll just write horizontally also so you could guess, understand it. When x is 1, y is 8. When x is 2, y is 13. When x is 3, y is, अब miss 13 को I wrote something like this, 8 times 5 into 1. Y is 23. Kindly observe this. This will give you, बस ठीक है, 1 thumbs up is enough here. 23. अब 8 plus 5. 8 plus 5 into 2. X is 4. Then y is, right, yes, 23. That is 8 plus 5 into 3. थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, प्लीज पे अटेंशन टू दिस बिकॉज आई हैव सीन दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कॉमन क्वेश्चन। और यदि ये समझ लिया तो अदर्स आर क्वाइट इजी फॉर यू। ओके, सो लुक एट दिस पैटर्न। व्हेन x is 5, one more time, look at it, y is 28। तो मुझे सपोज इसको जनरलाइज करना है, तो आपने नोटिस किया x is 2 तो यहाँ आया 1, यहाँ 3 आया तो यहाँ 2 आया, यहाँ मेरा x4 हो रहा है तो यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है। सो कुड आई राइट, जो भी मेरा x है उससे एक कम है, सो इस 1 की जगह पे मैं ऐसे लिखूं तो 2 minus 1, will you agree? क्योंकि जो यहाँ है उससे हम एक कम ले रहे हैं। Could I write this as 3 minus 1? Then also the same answer. Look at this. 5 2s are 10 plus 8 18. क्या मैं इस 3 को, we can write 3 as 3 could be written as next number is 4. 4 minus 1, and similarly here my x is 5, so 5 could be written as, I mean the next, here we want 4, isn't it? The rate is 28. 5 4s are, so 5 could be written, sorry, the 4 could be written as 5 minus 1. Did you understand the pattern? Okay, so with this, if I generalize x is suppose n, या तो मैं इसको x से लेकर चलूं, तो इसका मतलब ये हुआ ये y है वो इन जनरल क्या है, y क्या है, y क्या है टोटल फेयर आपका। तो इस y को, yes, very true Samruddhi, what you have written. So इसी तरीके से मैं लॉजिकली जाऊं तो y is what in general, मतलब y is total fair, so y is what 8 plus
5 into x minus 1. Did you understand this pattern? आदित्य, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप मेरा क्वेश्चन नहीं सुनते हो, so please don't disturb others. So do you all understand? Anyone? Any confusion for this? आपने ये पैटर्न ऑब्जर्व की, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपीज, ये मैंने डिसाइड किया, आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, ओके। तो मैंने डिसाइड किया कि फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपीज पे करना है, और जैसे जैसे डिस्टेंस आपका बढ़ता जाता है, मतलब कि नेक्स्ट 1 किलोमीटर होता है, सो नेक्स्ट किलोमीटर मतलब कि फर्स्ट के बाद वाले जो भी नेक्स्ट किलोमीटर है, उसके हर एक किलोमीटर पे आप 5 रुपीज पे कर। तो विद दैट लॉजिक इफ वी गो, तो सेकेंड किलोमीटर 2 किलोमीटर ट्रैवल किया तो आपको कितने पैसे देने? 13 रुपीज। 13 को हम स्प्लिट कैसे करेंगे? 8 प्लस 5 टाइम्स 1, एंड आई टोल्ड यू 1, उस 1 को हम कैसे ले रहे हैं? तो जितना हमारा डिस्टेंस है, यानी कि हमारा डिस्टेंस को हमने क्या किया? x, तो जो भी हमारा x है उससे एक कम, तो मैं उसको जनरलाइज लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू 8 प्लस 5 टाइम्स x माइनस 1। ओके, आप देखिए इस समय आप देखने जाओगे ना, तो पैटर्न, मेथड, फॉर्मूला कुछ नहीं, जस्ट योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और इसलिए अब मुझे चाहिए इक्वेशन, क्योंकि ये तो इक्वेशन नहीं हुआ इस तरीके से। सो हाउ डू वी राइट दिस? y इज इक्वल टू 8, सपोज आई ओपन द ब्रैकेट, मैं से यहाँ पे एक बार लिखती हूँ, फिर ओपन करती हूँ ब्रैकेट। सो देयरफॉर 5, जब ओपन करते हैं तो पता ना, दोनों से मल्टीप्लाई करना, 5x minus 5, and therefore y is equal to 5x 8 minus 5. I hope it is clear to you. So this is our equation. इसको और आपको अच्छे से लिखना है तो आप लिख सकते हैं 5x minus 5 plus 8 is equal to 0. I hope this is clear to you. Yes, children. हमेशा पहले क्वेश्चन सुनिए बेटा, और जब आप बुक पढ़ रहे तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए, and then try to convert it mathematically. You take the example, okay? इसी तरीके से उसमें numbers put करिए, and then you generalize it. ये कोई ऐसा मेथड नहीं है, आपको मेथड में देखने जाओ तो बस ये लिखना है और ये लिखना है, दैट्स ऑल, बस इतना सा ही लिखना है, ये आपको समझना है। दिस इज द पैटर्न व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स विद यू फॉर 4 marks, so I hope this is scoring for you. So let's go with one more question. I hope this is clear to all. इसी टाइप का टेक्स्ट बुक में भी एग्जाम्पल है, so please do solve it. And I hope कि आपने वीडियो वाले भी मैंने अपलोड कर लिए हैं, so you're watching and your doubts are being cleared. और I think कि मुझे इसमें नोट्स भेजने की जरूरत नहीं है, because if you see my videos, I've written all pointers. तो उस पॉइंटर्स को आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा, and that will be counted as notes, ठीक है? Because वो बहुत important points है. It comes in the MCQs and 1 mark questions. So please उसको avoid मत कीजिएगा, learn it. ठीक है? Let's take down another question. ठीक है? That suppose you are going to the hostel. A student goes to the hostel. It's okay now. Enough of thumbs up. Please pay attention. Okay? A student goes to the hostel. Fine. तो जो hostel का staying amount है, that is rupees 1000. Okay? And वहां पे फूड एक्सपेंस है, उसका एवरीडे पे करना होता है, फाइन। सो मंथली रेंट से इनिशियल जैसे ही कोई स्टूडेंट जाता है तो द स्टूडेंट हैज टू पे सम 1000 रुपीज, एंड मंथली फॉर डेली मतलब जो फूड का जो एक्सपेंस है, इट इज फॉर अ डे, फॉर 1 डे, ओके, इट इज 50 रुपीज, फाइन। सो वी हैव टू फाइंड आउट what is the total amount paid, okay, in form of x and y. ओके, तो आपको टोटल अमाउंट जो हमेशा है उसको आप y लेने की आदत डालिए, बिकॉज सी ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी नंबर अल्फाबेट्स ले सकते हैं, बट जस्ट फॉर एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सेट कर लिया ना, तो दैट विल हेल्प यू टू फॉर्म द इक्वेशन। तो सपोज मैंने टोटल अमाउंट ले लिया यहाँ पे एट द एंड ऑफ द मंथ, था तो मंथ हम हमेशा 30 डेज मान के चलेंगे यहाँ पे फिलहाल एग्जाम्पल के लिए, एज इट इज आपको उसको एक्स में कन्वर्ट करना है, सो इट वॉन्ट मैटर। सो टोटल अमाउंट बी rupees y, and like number of days be
x, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो यदि आपने ये कहा कि पहले दिन 1000 रुपीज तो फिक्स है, प्लस नहीं, अब यहाँ पे देखना है आपको 50, ओके, और फर्स्ट डे का आपका 1000 रुपीज में आ रहा है, फर्स्ट डे 50 रुपीज, ठीक है, और सेकेंड डे 100 रुपीज, थर्ड डे 150 रुपीज, फोर्थ डे 200 रुपीज। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका इक्वेशन काफी सिंपल बन रहा है, दैट इज y इज इक्वल टू 1000 plus as many days you are staying, you're eating. Yeah, I think somebody has written, maybe you have written. So you get it the same answer, 50 into x. And इसको हमें इस तरीके से लिखना हो, so I would write this equation as 50x minus y plus 1000 is equal to 0. या तो आप इस फॉर्म में भी इक्वेशन को लिख सकते हैं. So I think it's quite simple for you to understand. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो, राइट, प्लस साइन नहीं आएंगे, हाँ 50, हाँ इस तरफ, दैट इज 1000x पर 1000 प्लस 50x इज इक्वल टू y. तो आपको इस y को इस तरफ ले आए तो हम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में ये लिख सकते हैं. यहाँ पे आपने कहा वैसे रानी नहीं होगा, बिकॉज इफ यू विल सी हियर, यहाँ पे मैंने 1 डे का ईच का 50 रुपीज पे करना है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है. तो अब यही प्रॉब्लम होता है, यू नो लाइक यहाँ पे सिंपल आ रहा है, डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग बाय x आ रहा है, और जो टैक्सी क्वेश्चन है, ओके, उसमें आपको 1 डे माइनस करना पड़ रहा है. क्यों? 1 किलोमीटर का माइनस, वो आपका एक कम आ रहा है. क्यों? क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर के लिए फिक्स है, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए अलग है. बट आप यहाँ देखने जाओगे तो एक फिक्स अमाउंट 1000 है, और बाकी के डे वाइज आपको फूड का पैसा पे करना है. ओके, तो दिस इज फॉर द फूड मनी एंड दिस इज फॉर द स्टेइंग मनी. तो जितने दिन उतना ही, तो यहाँ पे 1000 रुपीज को टच नहीं करना है, isn't it? तो मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया कि 1000 रुपीज इज फॉर स्टेइंग, और फिर फूड एक्सपेंस आपको डेली पे करना है. तो ये क्वेश्चन सिंपल हो गया. ओके, I can understand that मैंने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बट जस्ट कि ऐसे में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो. दैट्स व्हाई आई गिव यू सिंपलर एग्जांपल. ओके, यदि ये मैंने पहले सिखाया होता ना, तो आपने पहले उसका आंसर भी मुझे ऐसे ही दे दिया होता. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू क्वेश्चंस, राइट. जब इस टाइप के क्वेश्चन है तो ये सिंपल है, एज मेनी डेज यू ईट यू पे द फूड. तो जितना भी आपका अमाउंट है पर डे का, दैट यू मल्टीप्लाई बाय x एंड द स्टेइंग अमाउंट यू एड इट. मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा. आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो इस क्वेश्चन में, आई मीन इस चैप्टर में इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. वन इज फॉर द टेम्परेचर रिलेटेड क्वेश्चन. डू ट्राई इट इन दिस वे, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर. एंड फिर इसमें आपको पूछेंगे, सपोज ask you that if a student stays there for 20 days, how much amount the student will pay. तो आपको यहाँ पे x is equal to 20 रख के जो भी वैल्यू होगी, and you have to substitute and give the answer. I hope I'm getting that, and I hope you are able to get what I'm saying. So इस टाइप के जो word problems है वो आपको go to करने हैं and try to solve it. मैंने एग्जाम्पल में वीडियो वाला जो है वो भी फॉरवर्ड किया है, तो आपने यदि वो डाउनलोड नहीं किया हो, मतलब ऑलरेडी वीडियो है आपके पास डाउनलोडेड, तो ठीक है, वरना यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी उसका लिंक है, सो यू कैन वॉच दैट एंड अंडरस्टैंड इट. तो इस चैप्टर के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस है, दैट वी हैव डन इट. ओके, एंड आफ्टर चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 का आई विल बी सेंडिंग वन असाइनमेंट इन द नेक्स्ट वीक, and for that only I request you that I need your IDs separately. So please listen to my messages, read my messages, follow it and do it. So that's all about your chapter number 4, linear equation with two variables. अब आपके जो डाउट है उसका कुछ होगा डिस्कशन, then you let me know on Saturday. We will be planning up the classes accordingly and sending the attendance sheet, so kindly do it. Okay, this was a very small class because I had limited things because we are ending up with the chapter. ठीक है, तो कुछ भी छूट गया हो या कुछ भी आपकी डिफिकल्टीज हो, then we will discuss it in the class on Monday or maybe on Saturday. Let's see. I'll let you know. Okay. Thank you.